कैसे हो दोस्तों? So after the completion of 6 parts, you know that very well. All parts are very important, particularly for EMI, electromagnetic induction. Now, friends, after part 6, we have conducted one test, and last time you also analyzed solution of this paper. Now, today we would like to move towards the next part of this chapter, that means the next session. Very important session, 2 to 3 points remaining. We would like to cover it, but electromagnetic induction part 7. If you think about part 6, then in part 6, you know that inductor. In part 6, we discuss very important point, inductor. So, what do you mean by inductor and inductance? So, inductor, that means the component of electrical circuit. Component of electrical circuit possess, you know that very well, self inductance. इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऐसा कंपोनेंट जो सेल्फ इंडक्टेंस पोजेस करता हो तो उसको कहते हैं इंडक्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर? द कंपोनेंट ऑफ द circuit possess self inductance. What do you mean by self inductance? You know that very well. Self inductance provides two very important information. कोई भी कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें दो इंफॉर्मेशन देता है. नंबर 1, कोई भी कॉइल में से हम करंट पास करेंगे तो उसके साथ 1 एम्पियर करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा उसका पता चलेगा. प्लस अगर मैं कोई कॉइल में से करंट पास करवा रहा हूं, अगर वो करंट को मैं चेंज करूं तो अपन लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो अगर अपन लोग 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट जो पास हो रहा है कोई भी कॉइल में से वो चेंज करें तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसका ब्यौरा भी सेल्फ इंडक्टेंस ही देता है. सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी possessed by any component of electrical circuit, it is called inductor. This is the symbol of inductor, you know that very well. And this is the positive and negative end. What is the potential difference across inductor having inductance L? So it is epsilon is equal to minus L di by dt. We also derived this equation, don't worry. Now here di by dt is called the rate of change of current. Now you can see last part 6, we have also discussed J double in 2 points. Number 1, what is the current passing through inductor? If the current passing through inductor decreases, whenever inductor is connected in circuit and whatever the current passing through inductor decreases, then we have to consider rate of change of negative, and automatically because of this equation induced EMF or potential difference across inductor is considered positive because of negative positive. So from today, whatever the current passing through inductor, if the value of this current decreases, current passing through inductor, the value decreases, then don't forget the potential difference across this inductor is considered positive. Similarly, current passing through inductor increases, then the rate of change of current is considered positive, and automatically you can see here induced EMF or potential difference across inductor is considered negative. This is called voltage drop. This is called, you know that very, this is called voltage drop and this is called rise up voltage. एक किरचॉफ्स लॉ है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. You know that very well. Whenever inductor is connected with battery and current passing through inductor, then whatever the induced EMF produced, this induced EMF, you can see this is your induced EMF. So whatever the induced EMF is produced, this induced EMF always in opposite direction of current. That's why this self-induced EMF is also called बैक ईएमएफ, क्योंकि ये बैक मारता है. और इंडक्टर के अक्रॉस जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल का एक ज काम है, वो कुछ भी करके करंट को रोकना चाहता है. करंट जो पास हो रहा है उसमें से उसकी वैल्यू चेंज नहीं करने देता है. सो ऑलवेज oppose the change in current. Don't forget back EMF, and back EMF always in opposite direction of अप्लाइड वोल्टेज. जो अपन लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे उससे ऑपोजिट होगा. मगर ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं.
And now we would like to think about one question. Already we have discussed this question in JEE NEET paper, but once again we would like to solve it. We would like to find VB minus VA. Find the potential difference between B and A. So this is your target. Okay. Now, first of all, we would like to apply here Kirchhoff's law. What is the potential at this point A? Let the potential at this point A is VA and potential at this point B, it is VB. Okay, so now we would like to apply Kirchhoff's law. Very easy, particularly for resistor and battery. We have already idea because of chapter number 3. Okay, and now we have idea about Kirchhoff's law for inductor also. So start. First of all, VA. You can see what is the current passing through this 1 ohm resistor. It is 5. Current already in the direction of the journey of your journey. You are moving from A to B. Current is also in the direction of your journey. So whatever the potential difference across this resistor, it is considered negative. So minus. What is the potential difference across resistor? What is the potential difference across resistor? It is current multiplied by resistance. So current 5, resistance 1. Now there is a battery, you can see that. And you are facing first of all positive pole and then negative pole. In short, you are moving from positive pole of the battery towards the negative pole. In short, voltage is dropped. This is called drop of voltage. Drop of voltage, then you have to consider negative potential. So minus 15. Now be alert for inductor. इंडक्टर आया तब आपको दिमाग में एक ज बात याद आनी चाहिए कि इंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है. इधर मेंशन किया है whatever the current passing through this inductor, it is decreases at the rate of 10 raised to 3 एम्पियर पर सेकंड. यानी 1 सेकंड में 10 raised to 3 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है. Okay, as per given data, here current decreases, you can see decreases. So if current passing through inductor decreases, then potential difference across inductor is considered positive. And if current passing through inductor increases, then what is the PD across inductor? Then PD across inductor is considered positive. But here decreases, so we have to PD across current increases, then negative, but here current passing through inductor decreases, so we have to consider rise of voltage, that means plus. So plus L di by dt, this is the potential difference across inductor, is equal to potential at point B, VB. So VA minus 5 minus 15, what is the value of L? 5 millihenry. Milli, that means minus 3 into di by dt. What is the di by dt? Rate of change of current. It is already given 10 raised to 3 ampere per second, you can see. So 10 raised to 3 ampere per second is equal to VB. So 10 raised to minus 3 plus 3 cancel. So ultimately I can write VA minus 5 minus 15 plus 5 is equal to VB. So minus 5 plus 5 also cancel. So minus 15 is equal to VB minus VA. So potential at point B with respect to A, or potential difference between B and A, is equal to minus 15 volt. That's your answer. And you know that very well, friend. This question already asking IIT 1997. So analyze it and then we'll start the practice. ये आपको अभी ट्राई किया, अब आप इसको एनालिसिस करो और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको सॉल्व करना है. Okay friends, so now we would like to think about one more. अब आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह सोल्व कर दिया, मतलब समझ लो कि इंडक्टर के फंडे आपके क्लियर. सो मैं ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपके मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे. दैट मींस ऑलमोस्ट आई कैन से you have idea about Kirchhoff's law for inductor.
ओके, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. मैं आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक, यू नो दैट वेरी वेल. ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट पॉजिंग ऑफ वीडियो को पॉज करो और अपने आप ट्राई करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो जस्ट concentration required. This is very important numerical. There is a diagram given. This is your point A. There is one inductor, then there is a battery, and once again there is a resistor. Okay friends, this is the inductor of 1 Henry, or there is a battery of 5 volt, and whatever the resistor given, it is 2 ohm. Okay, if current, you know that very well. First question, your target to find VA minus VB. This is your question, find VA minus VB. But here you have to find VA minus VB for 3 different situations. Number 1, start. पहला टारगेट आपको ट्राई करना है, find VA minus VB if current I is equal to 2 ampere passing through this circuit and it is constant. चलो, first question, find potential difference between A and B in sort VA minus VB. But for this situation, whenever current passing through this circuit, it is 2 ampere and this current remains constant. Start. Pause the video and apply your logic. And you know that very well. You have to think about पेन, पेंसिल, नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब कुछ कैंसिल लेके, तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि आपको इधर फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने दिया. मैं अभी सॉल्व करना शुरू करता हूँ. चलो, आपने वीडियो पॉज किया होगा, आपका आंसर चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर what is the current passing through this entire circuit? It is 2 ampere. Let the potential at this point A, it is VA, and the potential at this point B, it is VB. Start. VA, you can see there is inductor. You know that very well. Whenever you are dealing with word like inductor in the given circuit and you would like to apply Kirchhoff's second law, then be alert. Most important point is सबसे चिकना केस है, whatever the inductor given, keep in mind inductor becomes effective. Once again, inductor becomes effective if whatever the current passing through inductor continuously changes. Don't forget, inductor look like a wire, simple wire, for the situation in which current remains constant. यानी कोई भी इंडक्टर में से अगर जो करंट पास हो रहा है, अगर वो करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता हो तो ही इंडक्टर है सर्किट में इफेक्टिव. मगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहे, आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडक्टर आपको सर्किट में दे उसमें से कांस्टेंट करंट पास हो, मतलब समझो इंडक्टर यहाँ पे सिंपल एक वायर के तौर पे काम करेगा. दैट मींस हियर सिंपल वायर, तो इस इंडक्टर को अपन लोग कंसीडर करेंगे नहीं, बिकॉज हियर करंट रिमेन्स कांस्टेंट. सो फॉरगेट अबाउट इंडक्टर and directly jumps to, you can see that battery, and you are facing, you can see that you are facing first of all positive pole. That means you are moving from positive pole towards the negative pole. In short, voltage decreases, so drop of voltage minus. What is the voltage of this battery? 5 volt, minus 5. Then there is, you can see that resistor, already whatever the current passing through resistor, it is already in the direction of journey. मतलब हम लोग जा रहे हैं टू बी, करंट भी हमारे साथ साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर नेगेटिव. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 ohm resistor? PD across resistor, that means resistance multiplied by current. So what is the current? Current already 2 ampere, so 2 ampere multiplied by 2 ohm is equal to VB. So VA minus 5 minus 4 VB. So VA minus VB is equal to 9 volt. You can see. So this is your answer for the question number 1. Now we would like to think about question number 2. For the same diagram, what's the question number 2? Find VA minus VB
if current passing through inductor or if current passing through inductor L is decreasing at rate of 1 ampere per second. Okay, so we have to think about it. 1 ampere per second. Yes, start. 1 ampere per second. Once again you have to find potential difference across these two terminals, but for this situation, now whatever the current passing through inductor doesn't remain constant, it is continuously decreasing at the rate of 1 ampere per second. Think about it and apply your logic. रेडी? सो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई की होगी, सो अपन लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल VA. Okay, now you can see the inductor, but in this situation here inductor plays very important role. Why? Because whatever the current passing through inductor, it doesn't remain constant, it continuously decreasing. Now you know that very well. Current passing through inductor decreases, then potential difference across inductor is considered positive. So here plus PD across inductor plus L di by dt. Now battery negative, so minus 5, plus 2 minus any voltage drop minus 5. Resistor, so 2 into 2 is equal to VB. इतना डिफरेंस है. देखो ये L di dt का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कांस्टेंट करंट में नहीं था. सो VA L already here 1 Henry and di by dt also 1, no problem. So 5 minus 4 VB. So VA minus VB is equal to 1 5 minus 4, that means only 8. You can see this is your answer, 8 volt. चलो ये क्वेश्चन थर्ड नंबर. Find VA minus VB if current passing through inductor increases at a rate of 1 ampere per second. Start. What's the answer? So now we would like to check it. Once again VA, now inductor, but current passing through inductor increases. So PD across inductor negative. So minus L di by dt. These 2 points remain same, minus 5 minus 4 VB. So VA here L di dt 1 minus 4 VB. Ultimately VA minus VB is VB 10 volt. You can see. So there are 3 cases and 3 different answers for 3 different scenarios. So ये इंडक्टर के साथ डील करने का फंडा. इंडक्टर जब भी आए तब आपको उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी सिचुएशन देखनी है. अगर करंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इंडक्टर सिंपली बिहेव्स लाइक वायर. तो इंडक्टर है ही नहीं ऐसा समझो और इंडक्टर को सर्किट में भूल जाओ. तो बाकी के कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करना है. मगर इंडक्टर में से जो भी करंट पास हो रहा है वो बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो तो इंडक्टर की इफेक्टिवनेस आएगी, और वो इफेक्टिवनेस करंट कम हो रहा होगा तो उसका पीडी अपन लोग पॉजिटिव लेंगे, करंट बढ़ता होगा तो उसका पीडी नेगेटिव. यू कैन सी. सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैं इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो भी जेडब्ल्यू नीट रिलेटेड ही है. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. तो अपन लोग आज थोड़ा जेडब्ल्यू नीट रिलेटेड पॉइंट और उसके बाद बेस्ट 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले, जो दोनों पॉइंट्स थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग है. तो ये चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट थियरीज आई कैन से दैट. दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आने के और पूछने के पूरे चांस है. सो बी अलर्ट एंड इसको अच्छी तरह जरा डिस्कस करना है. ओके, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ पॉइंट्स खास में वो डिस्कस कर लो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को सीबीएसई रिलेटेड पॉइंट्स मिले हैं, कुछ लोग अदर इंस्टीट्यूट में जाते हैं कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए,
तो उसको ऐसा एक डिलीट पोर्शन का एक पेम्पलेट दिया गया है कि ये सब्जेक्ट में फिजिक्स में ये चैप्टर में से इतना डिलीट हो चुका है, तो वो सेंट्रल बोर्ड ने रिलीज किया है। हम लोग अभी गुजरात बोर्ड के लिए राह देख रहे हैं, डोंट वरी, मगर हो सके उतना अपन लोग जिसे कह सकते कवर करते जाएंगे। कुछ चैप्टर्स में मैंने देखा कि कुछ पॉइंट्स हटा दिए, मगर वो हटाने के बावजूद भी उसकी वैल्यू जोरदार है, तो अपन लोग देखेंगे, हमारे पास टाइम है तो उसके मुताबिक हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, आप अभी पढ़ाई में वही टॉपिक के ऊपर फोकस करना जो फाइनल एक जीआर थ्रू यानी कि एक ये परिपत्र जो बोर्ड में से उसके बाद अभी जो चल रहा है उसको एज यूजुअल पढ़ो विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। सो नाउ concentration required once again. Now we would like to solve one question based on NEET. So this question already asked in NEET. Okay, but what is the question? Current passing through a coil. Current passing through coil. Current passing through coil. Coil यानी simple inductor. Okay, is given by equation I is equal to t square e raised to minus t. Okay, this is the equation of current. कोई coil में से current जो पास हो रहा है वो इस equation के मुताबिक change हो रहा है। If inductance of coil is 2 millihenry, then find the time. You have to find the time at which induced EMF in the coil becomes zero. This is the very important question. एक कोयल दिया है, कोयल में से इतना करंट पास हो रहा है, टाइम के साथ करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। हमें ये फाइंड करना है कि कौन से टाइम पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो हो जाए। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन नीट 1999, बट आईएमपी बिकॉज काफी स्टूडेंट्स बी ग्रुप वाले मैथ्स से दूर भागते हैं जबकि ये प्योर मैथ्स है। सो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। पॉज द वीडियो। Okay friends, so now we would like to solve it. You know that very well. First of all, what is the general formula of induced EMF? So whatever the induced EMF, because of changing magnetic flux passing through, changing magnetic flux due to current passing through inductor, it is given by equation minus L di by dt. You know that very well. This is the formula for self-induced EMF. So friends, now we have to think about the time, but here current is given, don't worry. So epsilon is equal to minus L, differentiation of the value of current, bindas. So t square into e raised to minus t. Chalo. And as per given condition, we have to find the time at which induced EMF becomes zero. So we can consider induced EMF zero. Okay, start minus L. इसका डिफरेंशिएशन काफी लोगों को नहीं आता है, खास करके बी ग्रुप वाले, तो मैं इसका एक फॉर्मूला देता हूं मैथ्स का। दिस इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन सेमेस्टर नंबर और चैप्टर नंबर 2 3 3 4 स्टैंडर्ड 11 प्रोडक्ट रिलेटेड डिफरेंशिएशन। सो x बार y का डिफरेंशिएशन, y बार x का डिफरेंशिएशन, दिस इज द फॉर्मूला for mathematical process to get differentiation of any product or for multiplication. So here this is your x and this is your y. तो पहले x बार रखते हैं यानी t square बार, and we have to think about differentiation of e raised to minus t. What is the differentiation of e raised to x? अपन लोग जानते हैं e raised to x, ये एक ज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही, इंटीग्रेशन भी वही, मैथ्स वाले जानते हैं। सो e raised to minus t का e raised to minus t, मगर अपन लोग को ये माइनस t है उसका चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखो t स्क्वायर बार वी आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to minus t. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to minus t? ऑब्वियसली e raised to minus t, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to minus t, e raised to minus t, but
ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, मैंने आपको मेथड सिखाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए तब एक बंदा चिल्लाता है पावर। इसी तरह अपन लोग देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तब एक और बंदा चिल्लाता है एंगल। तो इधर ये पावर चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मेरा इंटीग्रेशन, सॉरी मेरा डिफरेंशिएशन करो। अभी जो e रेस टू माइनस टी हमने ये डिफरेंशिएशन किया, e रेस टू माइनस टी, वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था। अभी हमें पावर का डिफरेंशिएशन वापस करना पड़े तो व्हाट इज द पावर? पावर है माइनस टी। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ऑब्वियसली माइनस वन। अपने को माइनस वन रखना पड़े। ई आया डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस टी का। फॉर्मूला देखो, एक्स बार वाई का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस, अब वाई बार वाई यानी ई रेस टू माइनस टी बार, और किसका डिफरेंशिएशन लेंगे? नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट differentiation of t square. So what is the differentiation of t square? You know that very well. It is 2t directly. Okay, तो अब इसको सोल्व करें तो इसमें से आप देखो e raised to minus t common. Okay, so I can write here 0 e raised to minus t common. Remaining portion, sorry, there is l also minus l. अपन लोग minus l को भी रख देते हैं, don't worry. Okay, now t square into minus 1, so minus t square plus 2t, you can see this is the remaining portion after e raised to minus t taken common. तो ये सब कुछ तो फेंक देने का है ना, और is equal to के इस साइड समंदर होता है, जीरो मतलब, तो ultimately I can write minus t square plus 2t is equal to 0, you can see. Okay, so here now we have to think about t square is equal to 2t. So t is equal to 2, you can see, second. So this is your answer. If t is equal to 2 second, what happened? Induced EMF in this coil becomes 0. So very interesting question. Because of this differentiation, it is difficult particularly for B group students. A group वाले इसको अच्छी तरह सोल्व कर लेते हैं, मगर B group वाले को, इवन लॉजिकल स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिकल प्रोसेस के कारण कभी कभार दिक्कत होती है। तो वो जरा इधर खास देखे, x y जब प्रोडक्ट में हो तब x बार y का डिफरेंशिएशन प्लस y बार x का डिफरेंशिएशन, इन शॉर्ट बारी बारी डिफरेंशिएशन चेक करना है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन नीट 1999. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट सम थ्योरेटिकल पोर्शन। तो इंडक्टेंस और इंडक्टर के लिए हमने पहला ये पॉइंट डिस्कस किया। अभी इसका जेडब्ल्यू नीट का सुप्रीम एक लेवल बाकी है, वो अपन लोग ये पहले थ्योरेटिकल सेक्शन कवर कर ले, उसके बाद तो जरा देखो अभी ये जो पोर्शन अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं वो मास्टरपीस है, एंड इट इज ऑलरेडी यू कैन सी आस्किंग बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो ऑलरेडी बोर्ड का एक पार्टी है, और इसलिए इसको खास ध्यान रखना है, डोंट फॉरगेट। तो मैं पूरी थियरी समझ में इस तरह डिस्कस करता हूँ, तो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। सो आई विल राइट हियर 2021. दिस क्वेश्चन कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस, you can see the board exam. So what is the question? Obtain the formula for energy stored in inductor, most IMP. You know that very well in chapter number 2, formula for energy stored in capacitor, 1/2 CV square Q square by 2C. Similarly, we would like to think about formula for energy stored in inductor. So just concentration required. There is an inductor. This is the inductor, and it is already, you can see, connected with a battery of potential V. जरा देखते हैं अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद करो कैपेसिटर, दिस इज योर कैपेसिटर, एंड यू नो दैट वेरी वेल this capacitor is connected with battery. Then what happen? Whatever the electrical energy, ultimately I can say chemical energy, whatever the electrical energy or chemical energy of this battery get transferred to capacitor, and capacitor store this electrical energy, half CV square, between two plates of it. And between these two plates of capacitor, you know that a special type of field is produced. What is the name of it? Obviously, between these two plates of capacitor there is an electric field. So capacitor stores this electrical energy between, you can see the two plates, but I can say
inside the electric field. So very interesting point, capacitor stores electrical energy but in electric field. Similarly here, if you think about inductor, दोनों पैरेलली जाने वाले, don't forget here इलेक्ट्रिक फील्ड राजा है, तो अपन लोग जानते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड राजा बनने वाला है। तो ये इंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे ही करंट फ्लो होना शुरू। मगर अपन लोग तो जानते हैं कि जैसे ही करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट हो जाए। मगर खुदा न खास्ता अपन लोग जानते हैं कि ये इंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो शुरुआत में जीरो होगा, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ता हुआ मैक्सिमम होगा। डायरेक्ट अपन लोग जैसे ही स्विच ऑन करें तो पहले जीरो से लेकर मैक्सिमम करंट, मैंने फेराडेस लॉ का भी पॉइंट बताया था चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, करंट डायरेक्टली 0 to 10 एम्पियर नहीं, you can see that it takes time, no doubt microsecond, millisecond. So in short, whatever the current passing through this inductor, you can see that changes, and change in current, change in magnetic flux induced EMF। तो ये इंडक्टर के यहाँ पे, ये इंडक्टर के अक्रॉस EMF प्रोड्यूस होगा जिसको हमने नाम दिया था बैक EMF। इन शॉर्ट ये इंडक्टर एक बैटरी के तौर पे काम करेगा और इस बैटरी की पोलैरिटी इस बैटरी के मुताबिक ऑपोजिट यानी कि इस तरह होगी। देखो ऐसा, ये इंडक्टर बैटरी के तौर पे काम करे तो इसकी टर्मिनोलॉजी ऐसे होगी। अब इसका करंट, ये करंट ऐसे जाए तो ये इसको बैक मारेगा। इन शॉर्ट इसीलिए इसको अपन लोग ने नाम दिया था बैक ईएमएफ। दोस्तों बहुत ही मस्त पॉइंट है, जरा देखना, इसको अगड़म बगड़म करके भी पूरा किया जा सकता है, मार्क्स आ सकते हैं, मगर अपने को मार्क्स नहीं, पहले कंसेप्ट लॉजिक नॉलेज चाहिए, बाद में मार्क्स तो ऑटोमेटिक फ्लो होंगे। अब अपन लोग जानते हैं कि ये इंडक्टर के पास बैटरी है, यानी ये इंडक्टर एक बैटरी के तौर पे काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली ये जो इंडक्टर की बैटरी या इंडक्टर है उसका ईएमएफ, जिसका नाम ही हमने दिया है बैक ईएमएफ, वो बैक मारता है किसको, इस बैटरी के ईएमएफ को। यानी कि ये इंडक्टर अपने में से जो भी करंट पास हो रहा है उसको रोकेगा। इंडक्टर का काम ही है, यू नो दैट बैक ईएमएफ ऑलवेज oppose is, you know that very well, the change in current through inductor। तो ये इस इंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसको रोकेगा। रेडी? और इसीलिए अपन लोग के सामने चैलेंज आ गई। कोई बोले क्या चैलेंज इसमें आ गई? ये करंट को रोकेगा। ये इंडक्टर है एक बैटरी का रूप लेके, ये इच्छाधारी समझ लो, बैटरी का रूप लेके, इच्छाधारी नागिनी रूप लेके, इस तरह ये रूप बैटरी का लेगा और बैटरी का रूप लेके ये अपने में से जो करंट पास हो रहा है उसको रोकेगा। इंडक्टर करंट को रोकेगा, मगर हमें इंडक्टर में से करंट पास करवाना है। वी वुड लाइक टू एस्टैब्लिश सम करंट थ्रू दिस इंडक्टर। अपन को आई जितना करंट एस्टैब्लिश करवाना है बैटरी थ्रू, वी वुड लाइक टू एस्टैब्लिश आई अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दिस इंडक्टर, बट इंडक्टर opposes this current। In short, against this inductance, or I can say that against this opposition, we have to establish, and we have to establish, then we have to do some work। अगर ये इंडक्टर करंट को रोक रहा है, हमें करंट को भेजना है, तो हमें करंट को इंडक्टर के ओपोजिशन में वर्क करके भेजना पड़ेगा। और वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी वर्क करना पड़े वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। हियर कैपेसिटर में भी ये होता था, याद करो चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ये पॉजिटिव पोल के कारण इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर, ये कंटिन्यूटी रखनी हो चार्ज की, तो चार्ज को प्लेट नंबर 2 के ऊपर से प्लेट नंबर 1 पे लाना पड़े। मगर प्लेट नंबर 2 के ऊपर से प्लेट 1 पे आने के लिए और चार्ज को लाने के लिए उस टाइम पे भी हमने वर्क किया था अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, याद करो। फिर हमने बहुत एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, उसके लिए हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिया, एंड देन वी डिस्कस्ड इंटीग्रेशन। सेम स्टोरी हियर। मगर मैं वापस समझाता हूं थोड़ा बेस। वंस अगेन देयर इज एन इंडक्टर, it is connected with battery
obviously inductor is connected with battery, so current flows through it. But you know that very well, whenever current passing through this inductor, because of change in current, देखो ये माइक्रोस्कोपिक है, काफी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है, काफी स्टूडेंट्स ऐसा काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे डीसी बैटरी है, हमने जो करंट फ्लो करवाया वो तो करंट जिसे कह सकते कांस्टेंट होगा। यस, सपोज मुझे इसमें 10 एम्पियर करंट पास करवाना है, दिस इज योर आई 10 एम्पियर, मगर जब 10 एम्पियर में शुरू करूंगा, यहाँ पे एक स्विच है, वो स्विच में जैसे ही क्लोज करूंगा, ये t इज इक्वल टू 0 टाइम, चलो अपन लोग डेटा कलेक्ट करते ही जाते हैं, वी वुड लाइक टू establish 10 ampere current. Suppose at t is equal to 0 time, tell me what is the current passing through this inductor? It is 0. But whenever this switch is closed, the circuit is completed, now current start. But this current not directly becomes 10 ampere. ये इस तरह 0 एम्पियर में से करंट 10 एम्पियर बनने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, यानी इस इंडक्टर में से डायरेक्टली 10 एम्पियर करंट पास नहीं होगा, 0 2 4 5 10 फटाक से ऐसा 0 2 5 10, मगर 0 to 2 2 to 5 5 to 8 8 to 10, तो करंट जो इंडक्टर में से पास हो रहा है वो होगा चेंज, और करंट चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंडक्टर में जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, अपन लोग जानते हैं उसको कहते हैं बैक ईएमएफ। तो अपने को अब करंट इसमें एस्टेब्लिश करवाना हो तो अपन लोग जानते हैं इस बैक ईएमएफ के खिलाफ जाके, अगेंस्ट जाके अपने को करंट एस्टेब्लिश करवाना है। सो वी वुड लाइक टू एस्टेब्लिश सम करंट, बट हियर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट वी हैव टू डू सम वर्क। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव टू एस्टेब्लिश करंट अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क। तो ये बैक ईएमएफ के अगेंस्ट हमें करंट इंडक्टर में एस्टैब्लिश करवाना हो तो वर्क करना पड़ेगा। शुरू करते, देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे करंट कितना है, 0। अब सपोज मुझे इस इंडक्टर में 10 एम्पियर, दैट मींस आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश 10 एम्पियर, इट इज सपोज आई, मुझे 10 एम्पियर मतलब आई करंट एस्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले अपन लोग बहुत ही छोटा करंट फ्लो यानी एस्टैब्लिश करवाएंगे डी आई, सो वेरी स्मॉल पार्ट डी आई। Suppose for the establishment of DI amount of current, suppose we would like to establish DI amount of current in this inductor. So for the establishment of this DI amount of current, I can say small amount of current, whatever the work done required or whatever the time required, it is also very small dt. तो dt टाइम में di करंट, वापस dt टाइम में di करंट, इस तरह अपन लोग dt टाइम में di करते करते di अल्टीमेटली अपन लोग I करंट एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि di प्लस di डॉट 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 इट बिकम्स इक्वल टू I। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 0 to dt it becomes t is equal to t. In short, in t is equal to t time we can establish I amount of current। ये पहला पढ़ा हुआ है, देखना बराबर, ये अच्छी तरह देखना है। अभी इस इंडक्टर में 0 टाइम पे कोई करंट नहीं है, जैसे ही बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइम पास होता है तब हमने डीआई करंट एस्टैब्लिश करवाया, वापस डीटी टाइम में डीआई, तो अपन लोग छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा करंट एस्टैब्लिश करवाते जा रहे हैं, मगर ये एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इस इंडक्टर में से थोड़ा थोड़ा करंट अपन लोग भेज रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि 0 to 2 2 to 3 3 to 4, तो करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इन शॉर्ट इस इंडक्टर के पास है बैक ईएमएफ, और ये बैक ईएमएफ के कारण अपन लोग ये डी आई अमाउंट करंट एस्टैब्लिश डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। हमें डी आई जितना करंट एस्टैब्लिश करवाना हो तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क होगा अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ। लेट in a dt time duration to establish di amount of current, let work done required is dw, very small work done required, it is dw। वापस di जितना करंट dt टाइम में एस्टैब्लिश करवाना हो, so dw work is required। in this way dw, so to establish I amount of current in a t time, what is the total work done w, and whatever the work is needed to establish I amount of current in this inductor, this work done stored in the form of energy।
अल्टीमेटली ये वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, मतलब एनर्जी पूरी हो गई। मगर इसमें अपन लोग देखें अच्छी तरह, देखते रहना बराबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी ये थियरी में शुरुआत की 10 मिनट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बाद में पकौड़िए जैसी कोई टेंशन नहीं। अपने को जिसे कह सकते बेस बनाया, अब हमारे पास एक सिस्टम है क्या कि एक इंडक्टर दिया है ना, इस इंडक्टर में t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इंडक्टर में से 0 करंट फ्लो हो रहा है। अब इस इंडक्टर में मुझे बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन dt में अगर di जितना करंट एस्टेब्लिश करवाना हो तो बैक ईएमएफ के अगेंस्ट मुझे dw जितना स्मॉल वर्क डन करना पड़े। अब से फिक्स di जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एस्टेब्लिश करना हो इंडक्टर में तो dw जितना स्मॉल वर्क डन करना पड़े। तो हर di के लिए dw, हर di जितने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए स्मॉल वर्क डन dw। तो अगर टोटल करंट I एस्टेब्लिश करवाना हो तो टोटल वर्क डन कितना होगा W। ये वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अपने को W फाइंड करना है, मगर अब जानते हैं W इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ दिस ऑल dWs। और ये समेशन तो आप जानते हो किसमें कन्वर्ट होने वाला है, इंटीग्रेशन। तो अपन लोग को dW में जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we would like to think about power. You can see that here the power P is equal to, that means the rate of work, the rate of work done in establishment of current di. Ready? So rate of work done, it is nothing but it is simply power. So power is equal to P. P is equal to rate of work done, that means dW by dt, work upon time. Why we have considered dW by dt? Because we are discussing for very small amount of current, and that's why whatever the work is needed, it is also very small. But what is the general formula of power? Power is equal to epsilon into I. So I can write dW upon dt is equal to epsilon into I, P is equal to Vi. But epsilon is the back EMF और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो, सो इट इज L di by dt I dW by dt. Here we have not considered minus sign, exact formula minus L di by dt, माइनस साइन तो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिशन। तो अपन लोग ने तो कितनी बार बोला वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट, तो ये माइनस साइन हमने मैग्नीट्यूड के लिए हटा दी, dt dt कैंसल। सो व्हाटएवर द स्मॉल वर्क डन इज नीडेड, it is nothing but it is Li di, यानी इतना di जितना, इसका मतलब समझो to establish di amount of current in this inductor dW work done is needed। तो ये dW इतना होगा Li di। तो हमने Li di and dW फाइंड कर दिया। अब तो अपन लोग राजा, क्योंकि अब कुछ नहीं है। सो नाउ टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन इज नीडेड और रिक्वायर्ड to establish I amount of current is W, then W is equal to integration of dW, and set up the values of dW, it is Li di from here। रेडी, बट di चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कृपया I का इंटीग्रेशन करो और लिमिट भी I के फॉर्म में सेट करो। तो अपन लोग को I के फॉर्म में सेटअप करना हो तो 0 to I, because initially what is the current, 0, finally I, so 0 to I, WL already constant, so out of integration you can see, so W is equal to L, what is the integration of I, it is I square by 2, 0 to I, so what is the answer, 1/2 Li square। You can see if you set up the limit, अब लिमिट सेटअप करना स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 6 पे पहुंचने के बाद भी जो सीखना पड़े तो आईने के सामने खड़ा रहना पड़ेगा अपने को। सो दिस इज 1/2 Li square, you can see very IMP, but whatever the work done is needed to establish I amount of current in this inductor against the back EMF, it is stored in the form of energy। So energy is stored in inductor, it is W is equal to U is equal to 1/2 Li square।
दिस इज द धूम फॉर्मूला, मोस्ट IMP, ये धूम मचाने वाला, लाइक इट इज 1/2 CV स्क्वायर। इफ यू कंपेयर दिस बोथ फॉर्मूले, 1/2 CV स्क्वायर, इधर ही लिखता हूं देखो, 1/2 CV स्क्वायर। सो C for capacitance, this is the energy stored in capacitance, CV, इधर Li, इधर potential, इधर current, because in capacitor energy stored in electric field और इंडक्टर स्टोर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन पूछेंगे, इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर 1/2 Li स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है। सुपर, दिस इज द मोस्ट IMP, यू कैन सी दैट पॉइंट। और आपने देखा इधर इंडक्टेंस का काम है करंट को रोकना अगेंस्ट, यू कैन सी, इसीलिए इंडक्टेंस लुक लाइक इनर्शिया। जिस तरह मोशन अपन लोग देखे डायनेमिक, उसमें मास का काम है रोकने का, इनर्शिया, यू नो दैट मास। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में मास का रोल, इनर्शिया का रोल कोई प्ले करता हो तो इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन पूछेंगे, डोंट फॉरगेट, इनर्शिया रोल इज प्लेड बाय ब्लैंक इन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज इंडक्टेंस, क्योंकि ये भी इनर्शिया जैसे करंट के ऑपोजिशन में रहता है, मोस्ट IMP। और ये थियरी पूछने का अंदाज और लिखने का अंदाज ऐसा, ये जो टेबल है वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये आपको टेक्स्ट बुक में या एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं इसलिए मैंने बताया, आप इस तरह लिख सकते हो, मोस्ट IMP। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। सबसे पहले DI जितना स्मॉल करंट एस्टेब्लिश करने के लिए DW वर्क डन, तो इस तरह DI करंट एस्टेब्लिश करके टोटल हम I करंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो टोटल कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पोर्शन में DW का फॉर्मूला है, उसके बाद यहाँ से तो ये पोर्शन ना आए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। सो प्लीज, दिस इज द मास्टरपीस थियरी फॉर 2021 एंड दिस फॉर्मूला सुप्रीम, it is also very important for JEE NEET. Friends, analyze, this is the masterpiece question. Okay friends, so now we would like to think about one more question based on this energy stored in inductor। और ये भी क्वेश्चन है वो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया हुआ है। You know that very well, electrical energy density, obtain the formula for electrical energy density stored in capacitor और electrical energy density for capacitor, याद आता हो तो उसका फॉर्मूला, who has idea about the formula of electrical energy density? It is half epsilon E square, you know that, half epsilon E square. Okay, so friends, now we would like to derive the same equation for magnetic. Obtain the formula for magnetic energy density for very long solenoid। ये question damn sure for 3 marks, again 2021। Obtain the formula for magnetic energy density, you know that very well, formula for electrical energy density, formula for electrical energy density, it is half epsilon naught E square। ये भी हमने डिराइव किया था। But first of all, the question arises in your mind that what do you mean by density, energy density? Anybody? Energy density, that means energy per unit volume। So here we would like to obtain, this is, you can see that very long solenoid, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, करंट पासिंग थ्रू सोलेनोइड I, लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। सो your target to find magnetic energy density for solenoid। So what is the formula? Magnetic energy density is denoted by rho B, either rho E for electric field, rho B याद रखना है, B for magnetic field। So rho B यानी magnetic energy stored in solenoid upon volume। So magnetic energy stored in solenoid per unit volume, it is called rho B। So I can write rho B is equal to, what is the formula of magnetic energy stored in solenoid or inductor? Recently we have derived, it is 1/2 Li square, and volume, it is, you can see that volume being, volume
लिख सकते हो, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो अपन लोग कर देते हैं ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, सिलिंड्रिकल, यू नो दैट. Okay friends, so this is your equation number 1. In this equation number 1 there is, you can see few requirements. Number 1, it is capital L, that means the self inductance, and you have to derive the formula for current. ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यानी ये थियरी न्यूमेरिकल याद रखने के लिए. अब L तो हमने डिराइव किया था, तो हमें डायरेक्ट लिखना है वी नो दैट. भले कुछ भी ना जानते हो फिर भी कुछ लोग लिखते हैं वी नो दैट. क्या? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड इज गिवन बाय इक्वेशन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल. याद करो, ये भी मैंने आपको डिराइव करके बताया हुआ है लास्ट पार्ट 6. एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट टोरॉइड. टोरॉइड आएगा तो लेंथ की जगह 2 पाई आर. ये इक्वेशन दिमाग में होना चाहिए. सो एल विथ यू. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट करंट. So how can you find current? Just check it. So to find current we have to think about magnetic field. So what is the formula of magnetic field stored in an inductor or very long solenoid? So now magnetic field inside very long solenoid. What is the magnetic field inside very long solenoid? Anybody? So formula for magnetic field mu naught small ni. N small. What do you mean by small n? The number of turns per, check it, the number of turns per unit length, small n. So what is the formula of small n? Total number of turns, total length. N by L. Now from this equation what's your requirement? I. So I should be required in the form of subject. So BL upon mu naught n. चलो ये I भी मिल गया. So L with you, I with you, set up the value in equation number 1. So start from equation number 1. Energy density rho b. ये rho b बोल रहा हूँ, dou b नहीं, याद रखना 1/2. Okay, 1/2. What is the value of L? L already we have obtained. Mu naught n square a upon L into I square. So here I directly square लिखते हैं. So b square L square, b square L square upon mu naught square n square. Ready? And then divide by a to n. So मैं इधर ही a और l कर देता हूँ. पता चला ना, ये रहा. ये मैं पहले लिखता हूँ, इधर ही लो ना. चलो कुछ लोगों के लिए a by l. तो अपन लोग अब इसको सोल्व करना शुरू करें. तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए एल और एल स्क्वायर. ओके, तो मैं आपको थोड़ा और अच्छा पता चले, कॉम्प्लिकेटेड वर्क अपन लोग नहीं करना चाहते. ये एरिया इनटू लेंथ है, उसको ऐसे लिख देता हूँ, एरिया इनटू लेंथ. यू कैन सी दैट 1 अपॉन, आ गया एरिया इनटू लेंथ है. तो क्या है कि कैंसिलेशन इजी रहेगा. सो ए कैंसिल, L square cancel, L into L cancel, n square cancel. You can see. So what's the final answer? Rho b is equal to 1/2 b square by mu naught be cancel, mu naught. So this is your energy density, magnetic energy density, most IMP. 1/2 b square by mu naught और b square by 2 mu naught. इसके जैसा ही देखो, इधर एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, हियर परमिएबिलिटी, मास्टरपीस. ये आपका जिसे कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 का 10th नंबर का इलस्ट्रेशन है, जो बोर्ड में डैम श्योर है. 6.10. दिस इज योर इलस्ट्रेशन 6.10. तो ये चैप्टर 2 में हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. चैप्टर नंबर 6 में देखा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. और 2 और 6 यानी चैप्टर 2 और 6 का एडिशन करो 8. चैप्टर 8 में अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी दोनों का एडिशन, रो ए प्लस रो बी. जैसे 2 + 6 होता है, इसी तरह रो ए प्लस रो बी करेंगे वहां पे, मोस्ट आईएमपी. सो दिस इज द सुप्रीम क्वेश्चन फॉर 2021, डैम श्योर. Once again, what do you mean by magnetic energy density? We would like to discuss, but analyze at least one time. Okay friends, so
electrical energy density, that means energy stored per unit volume, but electrical energy stored. Now here magnetic energy density for very long solenoid, that means magnetic energy stored in inductor. So magnetic energy density for solenoid, it is magnetic energy stored in solenoid per unit volume. ये जो solenoid है उसके पर यूनिट वॉल्यूम कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी उसका ब्यौरा ये रो भी देगा. सो फॉर्मूला 1/2 बिकॉज ऑफ एनर्जी अपॉन एरिया इनटू लेंथ बिकॉज ऑफ वॉल्यूम. इसमें दो ही पॉइंट्स मोस्ट टाइम पे, एक तो इंडक्टेंस और दूसरा करंट. व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, ये हमने डिराइव किया हुआ है. सो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा. ये पूरा जो न्यूमेरिकल है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन है. लोगों के दिमाग में ये इक्वेशन नहीं आता है इसलिए फंसते हैं. सो डोंट फॉरगेट. आफ्टर दैट करंट फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी मेथड, जस्ट अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड. इट इज B is equal to mu naught NI चैप्टर 4. n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ. I को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ, केस फाइंड. I की वैल्यू, L की वैल्यू आपके पास है. जस्ट सेट अप इन इक्वेशन नंबर 1 एंड लिटिल बिट मैथमेटिकल ऑपरेशन. आंसर सुपर. तो ये मस्त क्वेश्चन, इसके पूछने के पूरे चांस है. अब दोस्तों ये जो चैप्टर है उसमें दो ही थियरीज है डिस्कस करने की है. एग्जैक्टली थिंग, मगर एडी करंट्स, लेंस लॉ और एसी जनरेटर, इसमें मैं एसी जनरेटर इसके बाद कवर करूंगा पहले और लेंस लॉ का डिस्कशन करेंगे और बचे कुछ न्यूमेरिकल्स वो अपना पार्ट 8 का मेन पर्पस होगा. और पार्ट 9 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, प्योर जेडब्ल्यू नीड फॉर इंडक्टर सर्किट. तो उसके लिए जेडब्ल्यू नीड के लिए बहुत फेमस. और एक पार्ट और डिस्कस करेंगे जिसमें इस चैप्टर के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स है जो जेडब्ल्यू नीड के लिए हो. मगर आज का लेक्चर पार्ट 7 सुपर इसलिए क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का भी मसाला है और इंडक्टर रिलेटेड हमने जेडब्ल्यू नीड के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए. अभी भी अपन लोग एक दो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं अगर अपने पास सिस्टम सेट होती है तो. बट एनालाइज इट. ओके, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको इधर अपन लोग डिस्कस करते हैं जो आपके फुल्ले बना है इसलिए. सो जस्ट बेस्ड ऑन यू कैन सी दैट इंडक्टेंस. ओके, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इंडक्टेंस रिलेटेड. दैट्स व्हाई. अब देखो इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि ये सब क्वेश्चन है उसमें अभी एक और कंपोनेंट ऐड होने वाला है. ये हमने इंडक्टर का डांस होने वाला है रेजिस्टर के साथ. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा. तो इसलिए अपन लोग एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करें विदाउट रजिस्टर. डोंट वरी क्योंकि रजिस्टर तो है ही नो डाउट. ओके, मैं आपको एक टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इसलिए टिपिकल है क्योंकि okay, chalo. The current in a coil, if you think about the data, the current in a coil of self inductance 2 millihenry. क्वेश्चन में दम है. मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो आपको ट्राई करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट नो डाउट, स्पेशली फॉर बी ग्रुप क्योंकि मैंने बताया रीजन मैथ्स के कारण. करंट इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देयर इज अ कॉइल. व्हाट इज द करंट? इट इज गिवन बाय इक्वेशन 2 sin t square. You can see this is your current. Current passing through inductor is given by this equation. Inductor having inductance 2 millihenry. Okay, then sorry 2 Henry only. Then the amount of energy spent during the period. This is your point. Amount of energy spent during the period when the current changes from 0 to 2 ampere is blank. Chalo, this is your question. Once again analyze.
What's the question? Amount of energy spent during the period for which current changes from 0 to 2 ampere. Think about it and try to solve it. This is the most time question. क्यों इधर करंट चेंजेस? बिकॉज करंट डिपेंड्स अपॉन, यू कैन सी दैट टाइम. तो ये आपको ट्राई करनी है. वंस अगेन कोई कॉइल है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है, उसमें से 2 sin t स्क्वायर जितना करंट पास हो रहा है, तो कितनी एनर्जी स्पेंड होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉइल whenever current changes from 0 to 2 ampere. ओके, सुपर. तो ट्राई करना और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इसको सोल्व करेंगे. दिस इज द मोस्ट टाइम पे. ओके, अगर टाइम देखते हैं अपन लोग रेडी. ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको थोड़ा और लॉजिक दे. ओके, मस्त क्वेश्चन है. अगर वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद देता हूँ, क्योंकि वरना कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा वो भारी लगे, इसलिए. क्योंकि एक जेडब्ल्यू का राउंड होगा तब अपन लोग डिस्कस करेंगे. ओके. ओके, सो नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 1997 रिलेटेड पॉइंट. फिर भी एक और क्वेश्चन इधर में करंट रिलेटेड देता हूँ. जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. ये सब सॉल्व करो दिमाग अप्लाई करने के बाद. ओके, दिस इज इज. सो दिस इज पॉइंट ए. नाउ we would like to think about diagram. There is a resistor, then inductor, battery, then inductor and resistor and B. Find VA minus VB. This is 5 ohm resistor. This is, you can see the 2 ohm resistor. Current passing through it is 2 ampere. This is 2 millihenry. And this is, you can see that again 2 millihenry. There is a 10 volt battery. Okay, find VA minus VB. Okay, number 1, for a constant current, and number 2, if current decreases at a rate of 10 raised to 3 ampere per second. Start. ये भी क्वेश्चन आपको देखना है, होमवर्क. तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन से वो ट्राई करना आज के लेक्चर रिलेटेड. नेक्स्ट लेक्चर दोनों IMPS 7 के बाद 8, 9 मोस्ट ऑफ चैप्टर कवर हो जाएगा, मगर अपन लोग फिर भी इसका A to Z डिस्कस करेंगे. जेडब्ल्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू. मिलते हैं दोस्तों. बी सेफ.